pожалуйста. Уважаемый Vladimir Vladimirovich, Mr. Putin, уважаемый премьер-министр Индии, distinguished Mr. Prime Minister of India, Mr. Modi, on behalf of entrepreneurs, I would like to first of all thank you for the opportunity to host today's meeting. Russia and India are connected by many centuries of history of economic ties. Russian history of cooperation with India goes back to the 15th century, since the travel of our merchant Afanasy Nikitin to India. Since then, our economic ties have been growing steadily. Today, it is difficult to find any area of economic activities where we are not working jointly, both on the territory of Russia and India. Without any doubts, it is interesting for businessmen of Russia and India to find out what is your point of view, Mr. Putin and Mr. Modi, on prospects of Russian-Indian economic ties, and to speak about and to voice ideas of our entrepreneurs in this regard. I would like to give the floor to President Vladimir Putin of Russia. Mr. Putin, you have the floor. Thank you. Honorable Mr. Prime Minister, dear colleagues, I'm really glad to have this opportunity to once again meet the leading representatives of business circles of Russia and India, and to discuss relevant issues and prospects of bilateral economic ties in a direct dialogue. I would like to emphasize that this communication helps develop mutual trade and investment in practice. During talks with Mr. Modi, we discussed measures to create the most favorable conditions for the further deepening of our business ties. One of the important issues in particular is providing more freedom of movement for businessmen. And today, an intergovernmental protocol will be signed facilitating visa regime for businessmen from Russia and India. As it is well known, there is a certain decline in our trade and economic cooperation, unfortunately. And first of all, this is due to external factors, fluctuation in demand and supply and currency volatility. That is why the main goal now is to use all of our opportunities to diversify Russian-Indian ties, to actively promote projects in such fields as high-tech, innovation, energy, aircraft building and machine building, medicine, the diamond industry. And these goals are achieved through regular contacts between the Chamber of Commerce and Industry of Russia and Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, between the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs and the Confederation of Indian Industry. I would like to underscore that leading Russian companies have taken a firm stand on the Indian market. They are actively involved into the renovation of the production capacities of India, developing its infrastructure. These companies include Rosatom, Gazprom, Russian Railways, Power Machines, Lukoil, Sistema Company, Rosneft Company, and Renova. And we've already achieved important results in energy, atomic energy first of all, and oil and gas sector. The construction of the first phase of the nuclear power station Kudankulam is at the final stage. There are 2 power units. In the near future, we'll start building 2 more units. During 20 years, we plan to build 12 nuclear power units in India in total with the use of Russian technologies. Energy companies of our countries are stepping up joint work on oil exploration, extraction and refining. This year, Rosneft and Indian Essar company have agreed to supply 10 million tons of oil per annum during 10 years to load the refining plant in the Indian state Gujarat. Gazprom is implementing long-term agreements on supply of liquefied natural gas to India, including from the fields of Russian Arctic shelf. Such big deals that are aimed for decades demonstrate that we are confident of
prospects of our business relations and their trust-based nature. We have traditionally good cooperation in hydro and thermal power industry. Right now, the power machine companies renovating turbo generators of Indian power stations such as Sipat, Obra, and Loktak. The Russian Direct Investment Fund, together with the Indian Tata Power, are exploring opportunities to finance energy projects, including to produce green energy. The RDIF and the Indian Infrastructure Development Finance Company have agreed on joint investment in the total amount of up to $1 billion. Our cooperation in the diamond industry is developing well. Over 9 months of 2015, Alrosa company has supplied $1.2 billion of products to Indian partners. To broaden our cooperation, we are establishing the special notified zone at the Bharat Diamond Bourse. Our economies are facing complicated goals of supporting national production, implementing import substitution programs. We believe that plans of Russian businessmen to participate in the Make in India initiative are far-sighted. Such companies as Sibur are involved into this initiative. Sibur is already building the biggest butyl rubber plant in South Asia in the city of Jamnagar. Other companies are also working in this direction. We would like Indian partners to locate more actively their production in Russia. A good example in this regard is the Kadima company's program to start producing pharmaceuticals in the Yaroslavl region since 2016. We support the commitment of our partners to the long-term resultative work in Russia. We'll do everything possible to make business development for them convenient here in Russia. In spite of the complicated global economic situation, main macroeconomic indicators in Russia remain stable. We have, for example, the unemployment level. We understand that it is a derivative of many other indicators, and the unemployment level in Russia is quite low. It's 5.6%. We have a moderate sovereign debt, which also demonstrates that Russian economy is stable. We have a stable high level of gold and foreign currency reserves, about $364.4 billion. We have a trade surplus of $126.3 billion. We're trying to do everything possible at the national level to improve the investment climate. And to do so, we improve our legal mechanisms, our corporate tax and anti-monopoly legislation. We are trying to reduce the administrative burden for businesses. And thanks to these measures over the last 5 years, Russia has moved up from the 124th rank to the 51st rank in the World Bank rating doing business. There are additional opportunities to broaden our business ties since the Eurasian Economic Union started to operate, and Indian companies will be able to work at this large market with millions of consumers under common, more liberal conditions. Let me remind you that this union was created on the WTO principles. And to conclude, I would like to emphasize once again that we're interested in a very close, constructive cooperation between Russian and Indian business circles. We will continue paying great attention to your ideas and your proposals in the future, and we will help you implement much promising joint projects. Thank you. Thank you, Mr. President. And now I'd like to pass over to Prime Minister of India, Mr. Modi. Thank Your you. Excellency, Mr. Putin, दोनों देशों के CEOs, आप लोगों के समक्ष बातचीत करने का यह मौका बहुत ही सुखद है। रूस हमारा बहुत ही विश्वस्त भागीदार रहा है, खासकर सुरक्षा के क्षेत्र में। हम भारतीय रूस के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं। मैं इस यात्रा में सुरक्षा क्षेत्र में अपने भागीदार देश रूस को भारत की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। रूस उन बहुत सारे क्षेत्रों से आगे हैं जिनमें भारत को अभी
बहुत प्रगति करनी है, जैसे कि रक्षा क्षेत्र, एरोस्पेस, आईटी, हैवी इंडस्ट्री। अभी तक हमारी भागीदारी हाइड्रोकार्बन में रही है, लेकिन अब हम उसे हार्ड कार्बन में भी ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हमने स्पेशल नोटिफाइड जोन स्थापित किया है ताकि डायमंड का सीधा ट्रेड भारत और रशिया के साथ हो। हमारी सरकार बनने के बाद पिछले 18 महीनों में बहुत से आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं से निपटने का रास्ता खोजा है। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं और उन रिफॉर्म्स की दिशा भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है। इन प्रयासों के चलते हमारी जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही है, जो बड़े देशों में सबसे ज़्यादा है। आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक के और भी बेहतर आशाएं दिखाई हैं। बहुत से आर्थिक मापदंडों पर हम करंट अकाउंट डेफिसिट हो या इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट हो, भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ये अपने आप नहीं हुआ, इसके पीछे हमारे बहुत से सुव्यवस्थित कार्य हैं। एफडीआई के क्षेत्र में हो या टैक्सेशन के क्षेत्र में हो या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में हो, हमने इन सारे क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से कड़ी मेहनत करके परिणाम हासिल किए हैं। हमारा मकसद है हमारे देश के युवा हाथों में को रोज़गार देना। उसके लिए हमने मेक इन इंडिया का कार्यक्रम भी चलाया है। हम भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2016 के विश्व बैंक के रैंकिंग में हम 12 स्थान ऊपर गए हैं। विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मुहैया कराने का हमारा सबसे बड़ा काम है। इसके लिए हमने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की है एवं टैक्स फ्री बॉन्ड भी लेकर आए हैं। हमारे इन प्रयासों को चलते भारत की आर्थिक साख विश्व में बहुत ऊपर गई है। विश्व की बहुत सारी संस्थाओं ने हमारे प्रयासों को सराहा है। एफडीआई में 40% की बढ़ोतरी हुई है। हम अब तीव्र गति से बढ़ने वाली आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं एवं ब्रिक्स में हमारा स्थान जो डामाडोल हो रहा था वह स्थिर हो चुका है। विकास की इन संभावनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए हमने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम अपनी टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी, स्टेबल बनाएं और दुनिया में व्यापार के लिए सरल देश बनकर आगे आए। रूस एवं भारत की क्षमताओं एवं संभावनाओं को सामंजस्य की बहुत गुंजाइश है। रूस के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग का स्कोप है। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम अच्छे और ख़राब समय में एक साथ रहे हैं और उसे बैलेंस करने का एक अच्छा अवसर है। रूस के हीरो की चमक भारत में एवं भारतीय अर्थव्यवस्था की चमक रूस में फैले, ऐसी मेरी इच्छा है। आप लोग सीईओ फोरम को फिर से एक बार सक्रिय किया है। हम चाहेंगे कि ये नियमित हो, असरकारी हो और उस दिशा में जो भी हमें करना होगा हम भी करेंगे। एक सुझाव जो आप लोगों के माध्यम से आया है कि बायलिंगुअल पोर्टल ऑनलाइन व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि रशियन भाषा में और भारतीय भाषाओं में अगर हम अपने व्यवसाय, व्यापार, रोजगार, विकास की बातें करेंगे तो शायद दोनों देशों में उसको बल मिलेगा। सीईओ फोरम में एवं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हमारी वार्ता में रूस द्वारा हमारे मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश की इच्छा जताई गई है। मैं इसका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। हम अन्य कॉरिडोर को विकसित कर रहे हैं, जैसे चेन्नई बेंगलोर, अमृतसर कलकत्ता,
मैं इसके लिए भी आपको निवेश के लिए मैं निमंत्रित करता हूं। आपके इंडस्ट्रियल पार्क में भारतीय कंपनियां निवेश करें तो ये हमें खुशी होगी, क्योंकि ये दो तरफा होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सीईओ फोरम में आज जो विस्तार से आपकी बातें हुई हैं वो बहुत ही परिणामकारी होगी, और दोनों सरकारें इस बात को आगे बढ़ाने में जो भी हो सकता है करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।